So we know from the Cartesian plane that if something is moving towards this direction, we assume it as negative, right? Tell me, guys. Tell me. Is it so? Yes, This, sir. Yes, sir. yes, this direction is assumed to be positive. The lower one is negative and the upper one is positive. Isn't it? Tell me. Yes. Tell me, guys. Okay. So now let's come to this question and let's try to solve N1. We need to find N1. What is N1? What is the value for N1? So before coming to N1, I would like to know from you that what is the net acceleration of the system? What is the acceleration of the system? You will say, sir, this is very easy. You just divide net force by its total mass. So total mass is 3m, isn't it? So Yes. the acceleration will be F upon 3m. Right, Mamta? Yes, sir. Okay. Now I would like to solve N1 by using two methods. That is by using this 2m mass and after that this m mass. Okay. So now let's make a free body diagram of 2m. Okay. So this is 2m. Now so all the forces acting on 2m mass. What I said that draw or mention all the forces acting on 2m. Okay, so let's show all the forces. First force, that is N1, is acting due to m, right? Other, that is F, is acting, right? Tell me, guys. So this is N1, this is F. Okay, and the body is accelerating in which direction? I want to know it from you. The body is accelerating in this direction, right? Since the force is applied in this direction, so the net acceleration will be in the same direction of the force, right? Tell me, guys, isn't it? Yes, sir. Mamta. Okay, she left the meeting. Okay. So what will be the value for the net force? Mrunali, what will be the value for the net force? You will say, sir, it is very simple. Simple, that is, just add all the forces acting on the 2m, right? So the force is F. We will have to take it positively because the direction of F is towards positive, right? And the N1 is towards negative. So F minus N1 will be M into A, isn't it? Tell me. Yes. Yes. So what I'm telling you is, Mamta, am I audible to you? Yes, sir. Okay. So net force, what I'm asking, what will be the value of net force acting on this 2m? Mamta will tell me. You will say, sir, just add all the forces acting on 2m. Add all the forces acting on Acting 2m, on that block. acting on 2m block, right? With their direction, with their respective direction. So what will be the value? What will be the direction? Is it will be negative? It will be positive, isn't it? Mamta. No, sir. Yeah, yeah. Yes, yes, it will be negative, it will be positive, respectively. So the value will be, net force will be F minus N1, which will be equal to mass into acceleration. Since body is accelerating towards positive direction, so the acceleration will be positive, isn't it? Tell me. Tell me, guys, Yes. isn't it? I mean, what kind of pathetic behavior is this? Why can't you respond, guys? Vaishnavi, Yes, Omkar, sir. everyone is requested to respond. So the net force will be F minus N1. F minus N1 is equals to M into A. So the N1 will be, sorry, minus N1 will be MA minus F, isn't it? So N1 will be, what is Yes. the value of M? That is 2M
into a 2m. का value कितना है? What is the value of acceleration? Acceleration is equals to F by f upon 3m F upon 3m. minus f, right? So we can cut this m from m. So the value will be minus. So what will be the value? Minus n1 is equals to Yeah. 2f upon 3 minus Yeah, f, F, right? So the value n1 will be yes. 3f minus 2f. So 2f f upon 3. minus 3f by F upon 3, right? Tell me. Got it? Yes. Okay. Now just try to solve the same n1 using this block. Using this block. How many of you can solve it out? Using this block, free body diagram. Tell me. Mamta, can you do this? Omkar, Yes. Vaishnavi, Yogesh, Mrunali, can you do this? Using this block. The value should be f Yes. upon 3. Or should I solve it? Let me solve it again. Let's take here. Let's take here. So this is block M having mass M. Okay, Mamta. Mm. Now Yes. we will have to show all the forces acting on M. We will have to show all the forces acting on M. So there is no force acting on M except N1. See, direct force acting on M is only and only N1. Isn't it? Tell me. N1. So we will have to show that only this force is acting on it. N1. Tell me, bachcho, isn't it? And what is the Yes, sir. motion? What is the direction of motion? What is the direction of acceleration? Isn't it this side? Tell me. Positive. Yes. Yes, So yes. what is the net force acting on M? You will say only N1. Only N1. Isn't it? Which is equals to M into A. Which is equals to M into A. So what will be the value of N1? Mass is M. What is the value of acceleration? Acceleration is F upon By 3m. 3. N1. F upon 3m. So just cancel m from m. So n1 will be f by 3. The value is again same. Now see, n1 is equals to f upon 3. And from here also, n1 is f upon 3. Got it? Tell me, Yes, bachcho, sir. got it? Yeah, got it. Okay. Got Now it. let's come to this question. And I would like to ask you that from which block we should start solving for n2. Either M or 2M. Tell me. I think in the last lecture, we were trying to solve from M and the answer was coming to be incorrect, right? Yes, sir. So now let's try to solve it using the M block. Using the M block. Okay. Let's take this block M. This is M. Are you guys comfortable in English or you are not? Especially Omkar. Yes, sir. Oh. So the total force acting on M is Mamta. The total force acting on M is first the F and the other one is N2. Yes, sir. Correct. What is yes? Only N1. What is the direction of acceleration? Tell me. Here I was wrong in the last class. Here I was wrong in the last class. So let me rectify myself. It is in What is negative side. yes? This the direction of acceleration is towards this side, which is negative, isn't it? This is Negative. N2. This is N2. This is F, which is negative. So what is the net force acting on M? You will say the net force acting on M is minus F plus N2, which is equals to M into minus A, which we can write is as M into A. minus MA. Minus A. Minus MA. We can write minus MA. Isn't it? Yogesh Dada, is it correct? Yes, sir. Correct. Yes, it is correct. So what will be the value for N2? N2 will be N2 is equals to minus MA
plus F, correct? So, okay, let me first solve the acceleration. I think the acceleration will be same. That is F upon 3, right? Acceleration is equals to F net upon Yes. total mass. Hmm. So it will be F by 3m. Got it? So let's put the value of the acceleration, that is minus m into F upon 3m plus F. So we can cut m from m. So the value will be minus F by 3 plus F. This is N2. So the value will be N2 is equals to 3, 1, 3. So it will be minus F plus 3. So it will be 2F by 3. Yes. Isn't it? Tell me. Isn't it? Okay. Those who didn't get it, let me write. It will be 3 minus F plus 3F. So the value will be 2F by 3. Got it? Bachcho, got it? Yes, Yes, sir. Yogesh Dada? Okay, now let's try to sort this N2 using this block. Can we do this? Yes, we can do this. Let's make a free body diagram and also mention all the forces acting on 2m. I think only one force is acting on 2m. That is a normal one, right? Yes. This way. And the acceleration and the direction of the acceleration is also towards this way. So this is N2. So N2, the net force is N2 and the direction is minus MA minus N2. This is also minus, this is also minus. So we can also cancel out minus minus. So the N2 will be M into F by, okay, wait, this is 2m. Mass, look, here mass is 2m. So we will have to mention 2m, okay? Yes. Now cancel m from m. The value will be N2 will be 2F by 3. Again the same. So what is important is just make a free body diagram and also mention all the forces acting on that body and also show the direction of the force and then just put the value for the net force and make it equal. The answer will be in your hand. Was it easy? Omkar, Vaishnavi. हाँ sir. Vaishnavi, what kind of uncouth behavior is this? I think I should throw her in the waiting room. Okay, now let's move to other question. आगे बढ़े ममता. Now let's talk about lift. Okay. ममता इंग्लिश समझने में इजी हो रहा था या मजा नहीं आ रहा था? कल तुम लोगों ने बायो पढ़ा था मृणाली, किताब उसके बाद उलट पलट के देखी थी एक बार भी जीवन में? हाँ, और मुंह देखा खोल के था। देखी शीशा के सामने? हाँ सर। तो गंदा दांत के अलावा और क्या दिखा था युगुला? ओके, मेरा दांत अच्छा है सर। सबको ऐसा ही लगता है. तुम भी हो द गर्ल विथ गोल्डन टिथ? नो सर, नो, मुझे नहीं चाहिए वो। ये तमगा तो बहुत अच्छा है. ममता को दे दे क्या? ममता, यू वांट टू बी अ गर्ल विथ गोल्डन टीथ? No, sir. अच्छा. She want to be ओमकार, girl with ओमकार, डू यू वांट टू बी अ गर्ल विथ गोल्डन टीथ? No sir. You Yes, want to sir. be red. But you are. He knows, Omkar is sir. a girl. She want to be Okay. girl Yes, with golden she is a girl with golden teeth. No, sir. He is. Sorry, she is red.
What should I say? रेड टिथ कैसे हो गया भाई? डाबर लाल विमल। दंत मंजन। अच्छा विमल, हाँ तो उसका तो Because केसरिया होता है ना, tobacco and women. केसरिया शायद होता है Little उसका। bit red. अच्छा दोस्तों, दोस्तों, भाई दोस्तों, Yes. अरे सुनो तो, ये सर आगे ये बताओ, हाँ ये ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लिफ्ट लगाएगा और ये एक नॉर्मल हाँ फोर्स लिफ्ट के ऊपर लगाएगा, बोलोगे हाँ ये तो बात सत्य है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? आसमान में। अगर ये आसमान में जा रहा है तो क्या ये ब्लॉक भी जाएगा? इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, द ब्लॉक विल ऑल्सो मूव अपवर्ड, राइट और रॉन्ग? राइट। Yes, this is right. So I would like to ask you, which force is causing the motion of 20 kg block towards upward? You will say it is normal reaction by the lift. This force is responsible for the upward movement of 20 kg block. Right, Mamta? This force is responsible. हाँ sir. So what is the value of this force? Just calculate it. Okay, the hint. Hint फिर से सुनो. हिंट बच्चों फिर से सुनो. आप 20 केजी का जब ब्लॉक बनाओगे, फिर से याद रखना, फोर्स 20 केजी के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है वो मेंशन करना है विथ डायरेक्शन. नेट फोर्स को बराबर कर देना, अपने आप आंसर आपके पॉकेट में आ जाएगा. अब बोलो, चाहिए पॉकेट में आंसर चाहिए? हाँ, तो ले लो फिर किताब में मिल पॉकेट. जाए बस इतना ही काफी है। ओके, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं. अच्छा, मैथ्स के सारे वीडियोस अपलोड मैंने कर दिए, कितने लोगों को पता है? 31 के 31 बताया, चैप्टर्स मुझे पता है कल ही सर, मैंने किए, कल बहुत रात में. सारे. हाँ, इसके अलावा मैंने ह्यूमन हेल्थ, जेनेटिक्स, है ना, केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री के. ममता, डोंट स्विच टू वीडियो. वीडियो ऑफ कर लो, छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे. सर गलती से. मैंने कई बार बोला सुरक्षा कारणों से वीडियो ऑन मत करो. अगर किसी को हार्ट अटैक या कुछ ऐसा हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सर मुझे देख के हद तक नहीं आई. आएगा भाई, आता है. आएगा सर वैष्णव, आएगा, सबसे वैष्णवी आएगा। हुई, ममता हुई, मृणाली हुई, ओमकार हुई, इन सबको देख के हो जाता. नहीं सर, लेकिन सर हम ओमकार हुआ। ऑन ही नहीं करते हैं। ओमकार भी हुई. अच्छा, मृणाली चाहे तो वीडियो ऑन कर सकती है पहाड़ों को दिखाने के लिए, जंगल, पहाड़, तेंदुआ, हाथी, हिरन, है ना, ये सब लोग तेंदुओं को एंजॉय कर. दिखाने के लिए जाऊंगी तो वो मुझे ही खा लेगा सर। नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा कैसे? काफी इजी है ना ये तो? बोलोगे हाँ इजी तो है. एक मैं बता दूं, उसके बाद तुम लोग सॉल्व कर लेना, इसके बाद एक और लिफ्ट का सवाल देंगे. एक बता दें फ्रेंड्स, एक बता दे क्या? हाँ सर। ये कितने केजी का ब्लॉक है? 20 केजी का। क्या मैं इसमें 20 केजी लिख दूं? हाँ. इसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं पहले तो ये बता दो मुझे. जो बता देगा समझो बहुत सही खेल रहा है. मृणाली तुम बताओ. तुम बोलोगी सर एक तो इसके ऊपर नॉर्मल लिफ्ट धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, वो, है ना, और और एक दूसरा धरती माता इसको नीचे की तरफ खींच रही है mg से. मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई फोर्स मुझे दिख रहा है. किसी और को दिख रहा है क्या? ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल 20 केजी ब्लॉक दे रहा है लिफ्ट को. तो हमको लिफ्ट से मतलब नहीं है, अपने को तो 20 केजी ब्लॉक से मतलब है. क्या मैंने सही बनाया है फोर्स? ममता, योगेश, ओमकार, सभी लोग बताओ. हाँ सर। हाँ। तो क्या मैं इसको माइनस दिखा सकता हूँ योगेश, माइनस mg? तुम बोलोगे हाँ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ही है ना, दिखा दो. और नॉर्मल ऊपर है तो प्लस. भाई नॉर्मल ऊपर है तो प्लस, मैंने बोला था ना. कार्टेशियन प्लेन के वैल्यू को बस Cartesian दिमाग में रखना, आंसर तुम्हारा हंसते खेलते आ जाएगा. जबकि बाकी टीचर्स क्या सिखाते हैं एक बार देख लेना. वो बोलेंगे इतना फोर्स है, इतना माइनस हो जाएगा तो इतना आएगा ना, उतना सोचना. हम तो सोचना भी नहीं सिखा रहे, क्योंकि जो चीज नहीं है वो क्यों सोचोगे, है ना. जो चीज है ही नहीं उसका उपयोग कैसे कर पाओगे. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस डायरेक्शन लगाओ. हमने डायरेक्शन लगा दिया. अब मुझे बताओ, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तुम बोलोगे इसका भी वही तो एक्सेलरेशन होगा, वो भी उसी में बैठा हुआ है, कॉमन सेंस वाली बात है। अरे हाँ या ना? हाउ? और वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे हाँ या ना बोल लो भाई। ममता तू कुछ बोल ही हाँ नहीं पा रही। सर। तो नेट फोर्स क्या होगा ममता? तुम बोलोगी सर नेट फोर्स N माइनस एम जी कर दो, क्योंकि एम जी माइनस में है, इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, क्योंकि एम इंटू ए तो करेंगे ही। क्यों योगेश? तो एन को तो खैर एन ही रहने देते हैं, माइनस एम जी को क्यों ना उठा के इधर ले आए, क्या कहते हो योगेश? हम्म तो माइनस एम जी अगर इधर आएगा तो क्या इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा ना। तो क्या मैं n इज इक्वल्स टू m को कॉमन ले लूं तो a प्लस जी लिख दूं? बोलो बोलो दोस्तों। तो ये हाँ तगड़ा सा सर। फॉर्मूला है, याद रखना। कोई भी चीज अगर लिफ्ट में ऊपर की तरफ, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है और तुम खड़े हो, तो तुम्हारे ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसका वैल्यू ये होगा। ये फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला। बट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन तो पूरा सॉल्व ही करेंगे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर। तो हम इसमें अब वैल्यू डालेंगे नॉर्मल का। एन इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास कितना है? 20। एक्सेलरेशन ऊपर कितना है? 2। धरती का मान लेते हैं, धरती माँ का 10। कितना हो गया? 20 × 12, 240। 240 न्यूटन। इजी था। मैंने कुछ नहीं किया, देखो ना, मैंने बस डायरेक्शन दिया, नीचे आया तो माइनस, ये ऊपर गया तो प्लस, ये ऊपर गया तो प्लस। इसके अलावा मैंने कहाँ कुछ किया है? हम्म। क्यों योगेश दादा, कुछ किए क्या? और इधर है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, खत्म। बाकी अब जो है वो है। हम्म। क्या भाई योगेश, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं सर। बस दे 1 मिनट दीजिए तुम लोग अगला सवाल। क्लास, हाँ 1 मिनट बच्चों तुम लोग क्लास में रुको। मैं यूं गया और यू आया। योगेश को होस्ट बना के देता।